बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर रहे हैं। कर्नाटक की जंग में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं और बीजेपी की तरफ से भी जमकर प्रचार वहां पर हो रहा है। इस बीच आज बीजेपी क्या वादे करती है इस चुनाव में वहां की जनता से, ये जो है वो साफ होगा। जो उनका मैनिफेस्टो है वो जारी किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें जो है बीजेपी की तरफ से इसमें कही जाती हैं। वैसे उम्मीद है कि जो बातें हम देख रहे हैं बीजेपी के नेता जो वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें इसमें शामिल होंगी, क्योंकि इस बार के मैनिफेस्टो के लिए बीजेपी की तरफ से जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। उनसे जो है अपनी राय देने के लिए अलग अलग इंतजाम जो है वो किए गए थे और उन सबको सम्मिलित करके ये जो मैनिफेस्टो है इसको तैयार किया गया है। और अब तमाम जो कर्नाटक के बड़े नेता हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बोम्मई और येदियुरप्पा की मौजूदगी में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का उसको जारी कर रहे हैं। तो बीजेपी के पिटारे में इस बार के चुनाव में क्या खास है लोगों के लिए, ये अब जो है यहाँ पर साफ होगा। बसवराज बोम्मई इस वक्त बोलने जा रहे हैं यहाँ पर, उनको सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। नम्मेल्लर नायकರು राष्ट्रीय भारतीय जनता पक्षದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸದಾನಂದಗೌಡಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, वेदिके में ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು है वो जारी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब प्रजा ध्वनि जो है इसको नाम दिया गया है। अब देखना यह है कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो की जाती हैं। प्रजा ध्वनि इसलिए क्योंकि इस बार जो मैनिफेस्टो है उसके लिए जनता से भी जो है सुझाव लिए गए थे कि वो उनके हिसाब से क्या जरूरी मुद्दे हैं वहां पर कर्नाटक में। वैसे इस बार के जो चुनाव प्रचार हो रहा है वो भी जोरों शोरों से हो रहा है, क्योंकि वोटिंग की तारीख भी नजदीक आ रही है। इस बीच आप देख रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे जो हैं वो चर्चा में वहां पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां भी वहां पर हो रही हैं। इस बीच आपने देखा कि जो बयानबाजी हालांकि हाल फिलहाल में हुई उसका भी जिक्र उन्होंने किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना वो साध रहे हैं, जेडीएस के ऊपर भी जो है वो निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीजेपी के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं वो आप आज यहाँ पर देखेंगे। ये जो मैनिफेस्टो है कर्नाटक की जंग में वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अब जारी किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर इसके लिए मौजूद हैं, उनके साथ बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता येदियुरप्पा भी वहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो कर्नाटक के लिए वादे हैं वो अब पेश किए जा रहे हैं। ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವೇ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। इस घोषणा पत्र को बीजेपी ने जनता की आवाज नाम दिया है, प्रजा ध्वनि इसका नाम है। और इसमें बीजेपी की तरफ से जो वादे हैं वो आप देखेंगे इस बार के चुनाव में। और यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा जो है वो 4% आरक्षण का भी रहा। अब उस पर क्या कहा जाता है वो भी देखिएगा। आपको ये भी बताएं कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने जनता से इस बार सुझाव मांगे थे और इन सुझावों के लिए कई सारे विकल्प जो है वो रखे गए थे। वेबसाइट के जरिए, व्हाट्सएप और QR कोड के जरिए ये सुझाव लोगों से लिए गए, यानी वहां की जनता क्या चाहती है, उनका क्या जो है चुनावों को लेकर इस बार के
क्या रुख है, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या उनके हिसाब से बड़े मुद्दे हैं, उनको भी इस बार देखा गया बीजेपी की तरफ से। और इन सुझावों के बाद ये घोषणा पत्र जो है इसको तैयार किया गया है और इसी लिहाज से इसका नाम भी प्रजाध्वनि रखा गया है, यानी जनता की प्रजा की आवाज। और अब इसको जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है। उधर जो सामने पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी के कर्नाटक में, उनकी तरफ से क्या है इस बार के वादे वो भी देखिए। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली, गृहिणियों को नकदी जैसी गारंटी दी है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या वादे किए जाते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी यहाँ पर अब हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में जो वोटिंग है उसकी तारीख भी नजदीक आ रही है और इस बीच आप देख रहे हैं कि जमकर जो प्रचार है वो भी यहाँ पर हो रहा है। और ये नतीजे भी आप देखिए, पिछली बार के जो हुए थे उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जो है मिली थी। हालांकि सरकार कांग्रेस और जेडीएस की बन गई थी, लेकिन बाद में सरकार में बदलाव वहां पर हुआ। और इस बार के चुनाव भी देखिए 10 मई को होने हैं, 13 को नतीजे आने हैं। अब 10 मई में ज्यादा दिन नहीं है और इसी सिलसिले में आप देखिए जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं वहां पर। जेपी नड्डा के भी वहां पर जो है रैलियां हुई बीजेपी अध्यक्ष की। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और अब वक्त है बीजेपी के मैनिफेस्टो का, जहां पर जो इस प्रचार के बीच इस बार के चुनाव में क्या बड़े मुद्दे बीजेपी के लिए हैं वो आप यहां पर देखेंगे। जनता से किस तरह के वादे करते हैं, किस तरह की उम्मीदें बीजेपी रखती है इस बार के चुनाव में जनता के सामने, वो यहाँ पर इस मैनिफेस्टो के जरिए साफ होगा। प्रजाध्वनि इसका नाम है और इसके अंदर जो अहम मुद्दे होंगे वो इसलिए भी देखना अहम है क्योंकि इसमें जो कर्नाटक की जनता है उनके सुझाव भी शामिल होंगे, क्योंकि उनसे भी अलग अलग माध्यम से अलग अलग विकल्प देकर बीजेपी की तरफ से इस बार सुझाव लिए ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ कृषि ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। तो अब से थोड़ी देर बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें जेपी नड्डा साहब भी हैं वहां पर और ये मुख्यमंत्री बोम्मई हैं, येदियुरप्पा हैं। इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये जो मैनिफेस्टो है इसकी बुकलेट को यहाँ पर जारी किया और अब इसके बारे में मुख्यमंत्री वहां पर बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस बार के मैनिफेस्टो में शामिल की गई हैं। वहां के जो बड़े मुद्दे हैं कर्नाटक के, किस तरह का अब तक का सरकार का काम रहा है, आगे का विजन क्या होगा, इस विजन डॉक्यूमेंट को अब वो समझा रहे हैं। तो ये काफी अहम होगा देखना कि बीजेपी किन वादों के साथ जो है वो जनता के बीच इस बार जाती है। प्रचार तो आप देख रहे हैं जोर शोर से हो रहा है, तमाम मुद्दे भी इस बार हावी हैं, चाहे वो हाल के कुछ बयान हों जिनका जिक्र पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में कर रहे हैं, वो अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर। एक भ्रष्टाचार भी, करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर है जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरीके से पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया। पीएम ने भी जो है निशाना साधा अपनी रैली के अंदर के किस तरह से 1 रुपए में 85 पैसे का जो वो बात चलती रहती है उसको लेकर कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर उस पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस अलग अलग जगहों पर जो है वो उठाती रही है मुद्दों को कि उनका कहना है कि रोजगार, बेरोजगारी पर बात हो, इन मुद्दों को जो है इनसे भटकाया जा रहा है बयानबाजी की तरफ जो है जिक्र करके। लेकिन ये तमाम चीजें हैं जिनकी चर्चा काफी जोरों पर है कर्नाटक में, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि वक्त अब ज्यादा नहीं है, 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले जो वक्त है उसमें तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। एक्स मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री सदानंद गौड़ा जी, मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ द कैंपेन कमेटी कुमारी शोभा करंदलाजे जी, श्री अश्वत्थ नारायण स्वामी जी, श्री भगवत कुबा जी, श्री के सुधाकर जी, अरविंद लिंबावली जी, नारायण स्वामी जी, के.एस. नवीन जी, senior members on the dais and the friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me. A few minutes back,
I got the opportunity to release the Manifesto of the Bharatiya Janata Party for the ensuing elections in Karnataka. First of all, as my colleague Sudhakarji said, that this manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers, who visited every nook and corner of the state, got the suggestions, and connected to the thousands of households, that this content has been created, which is in the form of this manifesto. Here I would also like to remind you that when Yediyurappa ji took over and later on Mr. Bommai continued, and when the baton was handed over to him, I can say that the Bharatiya Janata Party government converted the calamity into an opportunity. The pandemic of COVID-19, the floods, all that was converted into an opportunity. And if I speak in Hindi, I'll say, आपदा को अवसर में बदलने का काम येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने किया. And because of that, we can say that now Karnataka is reaching a 1 trillion economy. That we have to understand. One thing more I would like to say here is about the 6 years of the Indian National Congress misrule, where the good work done by Bharatiya Janata Party was a great setback because of the reverse gear government of Siddaramaiah, which ruled the state. We should also remember that during Siddaramaiah's regime, it was the looting of the natural resources, it was letting the criminal and antisocial elements run amok, and appeasing a certain section of the society only to consolidate their vote bank and playing the politics of vote bank. When I talk about the reverse gear government, we remember 2014 to 2019, where all the good policies of Prime Minister Modi's government was brought to halt in Karnataka. And that was the black day when the Karnataka saw. Here I would like to explain in detail also, because you will say that I am giving a very passing, sweeping statement. But it is not a passing, sweeping statement. I would like to give you and quantify my contention which I am saying. And when I say so, I will say tab or ab. Then and now, we have to understand the difference. And utilizing the opportunity, I would like to make it very clear that when Prime Minister Modi had asked about the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where the people of Karnataka were to get the benefit of it, the Siddaramaiah government sent the names, and the number of the names of the Kisan and the farmer was on record 1717. This is called halting the development. This is called using the brakes and becoming an obstacle between the people and the government of India for the good policies which is being pursued by Prime Minister Modi. And here I would like to also suggest you that now, when Yediyurappa ji came to the power, and later on the baton was handed over to Mr. Bommai, 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bommai government, by Yediyurappa government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. This is a classic example of double-engine government. If I talk about Yashasvi scheme, which was started by my very senior leader,
whom we are very proud of, Mr. Yediyurappa, that Yashasvi scheme was scrapped by Congress party. And in 2018, the insurance scheme was scrapped and it was only revived by the Bharatiya Janata Party government, and it ensured a registration of 32 lakh farmers. So we have to understand what do we mean by double engine. We have got double engine, there is a trouble engine. We are there for development, they are for the reverse gear. We are there to give the pace to the development, they are there to put brakes to the development. That we have to understand. If I talk about the Bhagya Lakshmi Yojana, it was for a secure future of the girl child, and giving 3,000 rupees annual fixed deposit in their name. Almost 3 lakh beneficiaries, women were there, 3 lakh children were there. And when the Congress government came, that is the Siddaramaia's most anti-people government came, then the Bhagya Lakshmi scheme was reduced to 65,000. And when again Yediyurappa ji came to power and Bommai ji came to power, now I am happy to share with you that almost 3 lakh children are insured under Bhagya Lakshmi Yojana. This change has taken place. If I talk about foreign direct investment, I am happy to share with you. When I say that it's a 1 trillion economy Karnataka is reaching, I would also like to share that Karnataka is now, under the leadership of Yediyurappa ji and Bommai ji, is now where the foreign direct investment is, Karnataka is number 1 in foreign direct investment. And in Congress regime, it was 1,75,000 lakh crores, and now it is 3,21,000 lakh crores. That we have to understand. If I talk about the average irrigation budget, it was 11,600 crore during Congress regime, and now it is 21,201 crore, which is an increase of 80%. That we have to understand. If I talk about the establishment of health and wellness centers, I was the health minister at that point of time when Siddaramaiah was the chief minister. And with a lot of push by the government of India and by the support of government of India, the Congress regime could only open 548 health and wellness centers were operationalized. But under Bommai ji's regime, health and wellness centers has reached the number of 8,618. This is the pace of the government in the health sector that we have to understand. During Congress regime, there was a breakdown of law and order, and the PFI was given a free hand to terrorize people, and you will be astonished to know that Bengaluru became the second most unsafe city for women in India. And that was the time when Mr. Siddaramaiah withdrew 175 criminal cases against PFI, Popular Front of India. But when BJP came, PFI was banned, NIA was given a free hand, and 41,000 security cameras were installed across the city, enhancing women's safety. I'm giving you the statistics, the data, which says that how we are working and how we want to bring the change. When I talk about the double engine, we are delivering best without rest, and the achievements of the government of India and government of Karnataka I would like to share with you. Bommai ji started this Raita Vidya Yojana, and 725 crore worth scholarship of 11 lakh children were given to farmers' sons, landless, to the farmers, to the landless, to the laborers, to the weavers, to the fishermen, to the cab drivers, to the auto rickshaw drivers, under the scheme of Vidya Nidhi scheme, which is Vidya Nidhi Yojana. If I talk about the development, as Mr. Bommai had talked about, that the farmers are getting 10,000 per year, in which 15,000 crores is being directly transferred to the Kisan, 6,000 from the government of India, 4,000 from the government of Karnataka, which comes to 10,000
rupees per year that we have to understand. The revolutionary changes have taken place. We have talked about the economic nyaya, justice, economic justice, and now we are talking about the social justice. It was a long pending demand, but it was under Chief Minister Bomeji that the SC got the reservation, scheduled caste got the reservation enhanced from 15% to 17%, 2% enhanced. And the ST got from 3% to 7% and 4% was enhanced. The Vokalingas reservation was enhanced by 2%. The Lingayats reservation was enhanced by 2% under the 2D category and the Vokalingas in the 2C categories. And here I would like to say, justice to all, appeasement to none. And so the unconstitutional reservation given to minorities was repealed. This we have to understand. And the double engine government delivered justice to the long pending issues. I'm talking about the long pending issues, which no government had the audacity to even touch these issues. They ignored it once for all. But when BJP government came, we tried to resolve, and the Upper Bhadra lift irrigation project, which was allocated the first installment of 5,300 crores and by the union budget. And the same way, Kalasa Banduri project, the state budget gave 1,000 crores. And if I talk about the Upper Krishna phase 3, 5,000 crores were given and were allocated. The same way, expedited the Bengaluru suburban railway pending for 40 years, for 4 decades. And 15,000 crores for it was allocated. The same way, the long pending 3,526 unrecorded Lambani Tandas and Kurba Hatis were declared as new revenue villages, and they were given the Hak Patras, which we call as the Haku Patras, and 1,75,000 beneficiaries have benefited out of it. This I'm talking how the long pending, long standing demands have been meted out, that I'm sharing with you. The same way, the 5,000 crore rupees were given to KKRDB in the state budget in this year 2023-24 for formed Kittur Kannada Development Authority. And after Modi government introduced the national education policy in 2020, I would like to share with you that the Karnataka government and the education department in implementing the national education policy is number 1, that we have to understand. The same way, 1 IIT, 4 medical colleges, 7 medical universities, and 2 triple ITs have also been established in the state of Karnataka. If I talk about the Arogyakara Karnataka, the best state in the country by establishing 8,618 health and wellness centers. 270 sanctioned Namma clinics have started functioning, including 108 in the Bengaluru itself. If I talk about, which Bomeji also talked about, is about the 1,38,000 Ayushman Bharat Arogya Karnataka have been issued. Here you see the Ayushman Bharat and the Arogya Karnataka, both together have taken care of the common man, that we have to understand, and 37 lakh poor people have availed this facility. If I talk about the super specialty, you will be astonished to note that the super specialty hospital in Kumta, multi-specialty hospital in Sirsi, 8 super specialty blocks costing 150 crore in Karnataka, Institute of Medical Sciences, Hubli, and critical care blocks in Kolar, in Bagalkot, in Yadgiri, in Gadak, in Chikmagaluru, Ramnagra, Vijayanagara, and Doda Balapura have been established, that we have to understand. If I talk about the Karnataka, which attracted 3.21 lakh, as I said, in the FDI, foreign direct investment.
I would like to share with you how things work and how governments work. It was in 2008 that the Shimoga airport, the foundation stone was laid. And in 2013 when Sitaramaiah came, it was full brakes were applied. From 2013 to 2019, not even one brick was put in Shimoga airport. And in 2019 to 2023, only in a short span of 4 years, Shimoga airport was dedicated to the people of Karnataka. That we have to understand. If I talk about the airports, certainly I would like to share with you that the Kalaburgi airport is operational, and now 6 airports are being constructed. The same way, Tumkur, Chitradurga, Davangere railway line, Bagalkot, Kudachi and Gadagwadi railway line are expedited. Historic increase in railway budget has been 9 times. That we have to again understand the development part has taken place. The Vande Bharat train, which started in South India from Mysuru, Bangalore to Chennai, is again a very classical example of the development of modern India and the connectivity which we are certainly going to witness, which we have certainly witnessed. We have also, I would like to share here, that we have talked about infrastructure, we have talked about health, we have talked about education, we have talked about social justice, we have talked about economic development, but here we have also taken care of historic steps to protect and revive the glorious culture of Karnataka and the Kannadigas. And for that, Anti-Cow Slaughter Act was passed in 2021. Anti-conversion law was passed in 2022. Undertaking comprehensive development of Anjanadri Hill, which is the birthplace of Anjaneya Swami, Sri Anjaneya Swami, 100 crore has been allocated for it. And the Anubhav Mantapa, 612 crores for the honor of the Sri Basveshwara, and again undertaking the construction of the majestic Rama Mandira at Ramnagara. All this shows how we have tried to revive the historic culture of Karnataka and the pride of the Kannadigas that we have taken care. Now introducing the manifesto, coming to the manifesto, you'll say that I've gone a long way only to give you the background. What does the seriousness of a manifesto means? Why I've elaborated and elucidated all these points in detail? Because you should understand that how governments work, who are the people behind putting the brakes in the development of Karnataka, who are the people who have who shed their crocodile tears and the reality is something different. Who are the people who are anti-Karnataka and Kannadiga, that we have to understand. And that is why I elucidated with facts and with data in front of you. But when I introduce this manifesto, which is, as we call it, as the Praja ya BJP ya Praja Pranalike, which means it is a people's manifesto. And when I say that it is Pranalike, the people's manifesto, it is built on the solid foundation of development. It is a manifestation of the double engine government, how the double engine government works. This manifesto is futuristic and is a vision document which fulfills the Prime Minister Modi ji's vision of Viksit Bharat, developed India. And the same way, it also shows the prosperity and the Naya Karnataka during the Amrit Kal in the next 25 years. So this is the foundation which we have taken care in this manifesto. Here I would also like to share with you that the manifesto is different from the Congress, which talks about guarantees, which has an outdated warranty. Where everything, they talk about guarantee which has got an outdated warranty. They have never given anything. They have only talked about it. But when we say, we mean it, and it is the manifesto, which is forward-looking document.
It contains a realistic, achievable promise which will fulfill the aspirations of Karnataka's youth, farmer, women, weavers, middle class, SC, ST communities, and also the all sections of the society will be taken care. Our manifesto is centered around 6 themes. And these 6 themes are 6A. Number 1 is Anna, which means food security. Number 2 is Akshara, which means quality education. Arogya, which means affordable and accessible health care. Adaya, which means assured income support. And Abhaya, social justice for all. And Abhiruddhi means development, prosperity for all. Under this 6 themes, our manifesto is centered around. And through this vision document, we have tried to restore the prosperity of Karnataka and the glory days of the Vijayanagara Empire. That is what we want. And for that, it is the foundation which we are, through this manifesto, we are keeping, and we are trying to see that in next 25 years, how do we go forward. तो ये आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा बता रहे हैं मैनिफेस्टो के बारे में, जो कि बीजेपी की तरफ से आज कर्नाटक के लिए जारी किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं। प्रजाध्वनि इसका नाम दिया गया है क्योंकि जनता से सुझाव लेकर इसको तैयार किया गया है। और ये भी बताया उन्होंने कि 6 थीम है जिसको लेकर इसको तैयार किया गया है, जिसमें रोजगार भी है, इसके अंदर अच्छी शिक्षा भी है, तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। अखिलेश जी काफ़ी विस्तार से जेपी नड्डा यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। ये जो 6 थीम्स इन्होंने जिक्र किया, इसमें लगभग सभी चीज़ों को टच कर लिया है बीजेपी ने। और 6 थीम बनाई गई जिस पर कि अन्न है, अक्षर है, आरोग्य है और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ों को करके बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। प्रजाध्वनि इसका नाम दिया गया है क्योंकि जनता से सुझाव लेकर इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस मैनिफेस्टो की जो बताना चाहूंगा, जो बीजेपी ने प्रमुख वादे यहाँ पर किए हैं। हर बीपीएल परिवार को 3 जो महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दिवाली, उस पर 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। हर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर की अच्छी गुणवत्ता वाला किफायती खाना, स्वस्थता प्रदान करने वाला भोजन दिया जाएगा। इसी के तहत हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी का दूध मिलेगा। हर महीने 5 किलो श्री अन्न और श्री धन्य राशन किट भी दी जाएगी। इसके साथ ही बेघरों के लिए 10 लाख मकान देने का भी वादा किया गया है। महिला SC ST घरों के लिए जो है 5 साल के लिए 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड कराया जाएगा। सीनियर सिटीजन को हर साल मुफ्त चेकअप, हेल्थ चेकअप होगा। इसके अलावा कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही शहरी गरीबों के लिए 5 लाख घर होंगे। वोकल लिंगा और लिंगायत के लिए 2% आरक्षण बढ़ाया गया, उसका भी जिक्र किया गया है। 30 लाख महिलाओं को मुफ्त बस पास दिए गए हैं, ये भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बेटा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय हैं, इनको आदिवासी सूची में बीजेपी की सरकार बनती है तो शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जो हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, उसको लेकर के भी कुछ बातें कही गई हैं। समान नागरिक संहिता के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। कर्नाटक में NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, लागू होगा। जो अवैध शरणार्थी उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये भी इसमें जिक्र किया गया है। ये भी कहा है कि सरकार ने PFI और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया है। और इसके साथ ही जो देव यात्रा होती है तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ, वहां जाने के लिए गरीब परिवारों को एक समय के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मंदिरों के प्रशासन का मुद्दा एक काफी हॉट इश्यू होता है, जो कि साउथ इंडिया में खासतौर से चर्चा होती है। उसके में मंदिरों के प्रशासन के लिए संपूर्ण स्वायत्तता देने के लिए भी एक समिति का गठन होगा। और साथ ही बेंगलुरु के विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे वादे हैं जो बीजेपी ने किए हैं। और इसकी तुलना भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कांग्रेस की गारंटी है उनसे किया और कहा कि जब कांग्रेस की अपनी वारंटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी गारंटी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी बम्बई सरकार का जो कामकाज उसका रिकॉर्ड भी बताया और कहा भी कि कहां का जो वादे किए गए थे पिछली बार के, उन्हें पूरा किया गया है।
शुक्रिया अखिलेश जी आपका ये सब समझाने के लिए। जो घोषणा पत्र है बीजेपी का कर्नाटक के लिए जारी किया गया है, और अखिलेश जी बता रहे थे इसमें क्या मुख्य बिंदु रहे हैं। तो ये जो वादे हैं बीजेपी के इस बार के चुनाव के लिए हैं, अगर सरकार बीजेपी की यहाँ पर रिपीट होती है तो क्या चीज़ें हैं जिन पर फोकस रहेगा।